Cell culture. What is cell culture? The first thing that comes in mind. Cell culture definition. Cell culture refers to the process of growing and maintaining cells in a laboratory environment outside of their natural biological settings, typically in a controlled culture medium. Rox is the first scientist that introduced the method of cell culture in 1885. This technique allows researchers to study the behavior and characteristics of cells in a more controlled environment and is a critical tool in various fields of biomedical research such as drug development, vaccine production and basic cell biology. So, simple हम कह सकते हैं कि what is cell culture? Cultures means to multiply and the cell, which is the basic unit of living organism. To multiply the basic unit of living organism is called the cell culture. We culture the cell in specific environment. हम एक खास environment उन्हें देते हैं और एक खास कल्चर मीडिया देते हैं जो कि उनकी बायोलॉजिकल सेटिंग, नेचुरल बायोलॉजिकल सेटिंग की तरह एक्ट करता है और हम इस तरह लेबोरेटरी में उसको कल्चर कर लेते हैं. Types of cell culture. Primary cell culture, which have two subtypes, the adherent cell culture, the suspension cell culture. Second is secondary cell culture, and the third is cell line, which have subtypes infinite cell line and the finite cell line. Primary cell culture. Primary cell culture is the process of isolating and culturing cells directly from a tissue or organ to create a populations of cells that retain many of their original characteristics and behavior. The cell grew and multiplied in a suitable condition until they filled up all the spaces available, which is referred as reaching confluences separated by enzymatic or mechanical method. तो सिंपली हम इस चीज को कह सकते हैं कि प्राइमरी सेल कल्चर वो कल्चर है जो हमें ऑब्टेन होता है व्हेन वी टेक अ सेल स्पेसिफिकली टिश्यू और ऑर्गन सेल और फिर हम उससे पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल कंडीशंस और जो कि बिल्कुल एक्ट करते हैं द ओरिजिनल सेल्स की तरह और इनकी सेपरेशन हम करते हैं थ्रू द एंजाइमेटिक और मैकेनिकल मेथड. तो सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और तब तक ग्रो करते हैं जब तक कि वो पूरा मीडिया का पूरा एरिया ऑक्यूपाई ना कर दे और जब वो चीज ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि दे आर रीचिंग टू देयर कॉन्फ्लुएंसेस. Confluences is basically the area covered by the cell culture. Primary cell culture. As you can see, there is two diagrams. One is showing the adherent cell culture and the second is showing the suspension culture. First, we're gonna talk about the adherent cell culture. Adherent cell culture refers to the growth and maintenance of cells that requires a surface to attach to in order to proliferate and survive. Example is cultivations of human skin fibroblasts, which requires a surface such as tissue culture dish or flask coated with the extracellular matrix proteins like collagen to attach or proliferate. इन ईजी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि एडहेरेंट सेल कल्चर वो सेल कल्चर होता है जिसको ग्रो करने के लिए कोई एंकर मीडिया चाहिए होता है. अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन स्किन फिब्रोब्लास्ट की तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की लाइक कोलेजन की जरूरत होती है कि वो उससे एंकर कर सके और ग्रो कर सके. As you can see in the diagram, the cells are attached to the bottom and they are showing the adherent cell culture type. Now the second is the suspension culture.
Suspension cell cultures refers to the growth and the maintenance of cells that can proliferate and survive while freely suspended in a liquid medium without requiring a surface to attach to. Example, the cultivations of Chinese hamster ovary cells, which can be grown in suspension in a liquid medium such as DMEM or RPMI without requiring a surface to attach for their growth and proliferations. इन ईजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन सेल कल्चर वो कल्चर है जो कि फ्रीली इन लिक्विड सस्पेंडेड मीडियम में जो है ग्रो कर सकता है, उसको एंकर करने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए. इसकी मिसाल है तो चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी को अगर हम उसको उसके DMEM और RPMI मीडिया या जो लिक्विड मीडिया है उसमें ग्रो कर रहे हैं तो उसको पॉलिफिलेशन और ग्रोथ के लिए जो है कोई ख़ास एंकरिंग मीडिया नहीं चाहिए होता. दे आर जस्ट ग्रोइंग इन द लिक्विड मीडिया. Secondary cell culture. Secondary cell cultures refers to the process of subculturing cells from a primary culture into new vessels to continue their growth and proliferations. Secondary cell cultures are typically maintained for a limited number of passages, after which they become senescent or undergo genetic changes that alter their behaviors. In simple हम कह सकते हैं secondary cell culture वो cell culture है जो कि primary culture की सब कल्चरिंग इनटू न्यू वेसल यानी न्यू कंटेनर में करने की वजह से ग्रो होता है. सेकेंडरी कल्चर की खासियत है कि वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेजेस लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेजेस मतलब कि खास नंबर में ही वो सब कल्चर अच्छा लगता है. एक टाइम किया, दूसरी टाइम किया, तीसरी बार, बट आफ्टर सम टाइम दे बिकम सेनेसेंट लाइक दे गेटिंग ओल्ड और उनके अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी एक ओरिजिनल सेल जो कि जिस सेल से हमने लिया था सेल उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है. Here is the example of secondary cell culture. To culture HEK293 cells, human embryonic kidney tissues. In secondary cell culture, the cells are isolated from a primary culture using the enzymatic digestion or mechanical dissociation. Next, the cells are seeded into a new culture vessel and provided with culture medium that is changed periodically to maintain cell health. The cell grows and divides to form a new secondary culture that can be used for various experiments such as transfection, drug screenings, or protein expression studies. In simple, secondary cell culture अगर हम मिसाल है HEK293 सेल जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी टिश्यूज हैं, हमने पहले एक सेल लिया, थ्रू मैकेनिकल और एंजाइमेटिक डाइजेशन के थ्रू हमने उस टिश्यू से एक सेल आइसोलेट किया, हमने उसका सब कल्चर बनाया इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड गिविंग द प्रॉपर मीडिया टू मेंटेन देयर हेल्थ. और यही जो सेकेंडरी सेल कल्चर है आगे जाके हमें मदद कर देता है ड्रग स्क्रीनिंग और प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टडीज में. Now in the end we talk about the cell line. A cell line is a population of cells that have been derived from a single cell and can be cultured and grown in vitro under laboratory conditions. Example is the HeLa cells are isolated from cervical cancer patients. HEK293 cells derived from the human fetal cells. Actually, the cell line is the cells that is obtained जो कि हमें मिलते हैं by the subculturing of secondary cell culture. और उसमें भी हर सेल नहीं, हम स्पेसिफिक सेल उठाते हैं and that specific cell is called cell line, जिनको हम लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि लिविंग बीइंग के अंदर ऑलरेडी एक सेल जो मौजूद होता है, जिस तरह वो एक्ट करता है उसी तरह ये भी एक्ट करते हैं. जैसे अगर ह्यूमन फीटल सेल्स HEK293 सेल को ले रहे हैं तो HEK293 सेल्स की जो सेल लाइंस है वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि ह्यूमन फीटल सेल्स इनसाइड ह्यूमन करते हैं. Now here we discuss about the types of cell line. You can see on screen there are two boxes. One is finite cell line and other is infinite cell line. And
I'm here giving the difference between both of them. Finite cell line divide only a limited number of times, while infinite cell line doesn't divide on limited condition, but they divide unlimited number of times. Finite cell line multiplies slowly, while infinite cell lines multiply rapidly. Finite cell line एंकरेज डिपेंडेंट है, उसको एंकर होने के लिए मीडिया चाहिए, जबकि इनफाइनाइट सेल लाइन को नहीं चाहिए. फाइनाइट सेल लाइन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली प्रोड्यूस हो जाती है, जबकि इनफाइनाइट सेल लाइन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात क्लियर करती हूँ. फाइनाइट सेल लाइन को आप ऐसे ले सकते हैं कि एक ओरिजिनल सेल है. अगर हमने एक सेल लिया लिविंग बीइंग से और हमने उसे कल्चर किया, मजीद कल्चर किया और सेल लाइन तक आया और उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, वो बिल्कुल वैसे एक्ट कर रहा है जैसे एक ह्यूमन सेल एक्ट करता है, तो फाइनाइट सेल लाइंस में. बट अगर वही सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी कोई जेनेटिक म्यूटेशन, कोई अल्टरेशन हो जाती है, समटाइम्स वो ग्रो कर जाता है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट सेल लाइन. And that is all about my cell culture lecture. In this lecture, we have discussed what is cell culture, function of cell culture, types of cell culture, and why we do the cell culturing. So that is my wrap up.